नमस्ते दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया से होंगे। आज मैं आपके सामने अपनी दूसरी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें कि मैंने अपने करियर में इम्पोर्टेंस पाई है उसके लिए। तो सबसे पहली में क्या हुआ था कि अगस्त आते आते हमको ये बोल दिया गया था, क्योंकि उस वक्त मैं HCL टेक्नोलॉजीज में काम करता था। सो अगस्त में आते आते हमको ये बोल दिया गया था कि बॉस आपको ऑफिस आना है। पिछले 6 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था और कोविड में तो और ही ज्यादा गहन वर्क फ्रॉम होम हुआ। सो आई डिसाइडेड दैट if I have to go to office, then it's gonna be very difficult because I shifted myself into a very different city. So अभी क्या करने का है? मैं बहुत परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं? Then I started doing this prayer. I started doing this prayer. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. And I started writing. Now, there are 3 combinations I used basically. What were those combinations? I started scribbing and I started visualization and I started affirmations. ये जो 3 चीजें मैंने affirmation किया कि मुझे एक नई नौकरी चाहिए जिसमें कि मुझे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिले और मैं उस कंपनी में मुझे ऑफिस जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये मैंने एफर्म किया। उसके बाद उसको मैंने विजुअलाइज किया कि मैं अपने घर में बैठ के, बिकॉज नाउ आई हैव दिस सेटअप विच आई हैव क्रिएटेड। पहले मेरे पास एक सेटअप नहीं था, तो मैंने ये विजुअलाइज किया कि मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं आराम से काम कर रहा हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है और मैं अपने बेटे का भी ख्याल रख पाता हूँ और मैं घर में मेरे को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। आई कैन कुक एनी नॉर्थ इंडियन मील, राइट? सो गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, तो मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने ये सारी चीज़ें विजुअलाइज करी। रोज सोते से पहले, जागने के बाद, I used to visualize these things that yes, I am preparing meal for my kid, I am working from home and मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। I don't have to go to office, nobody is calling me to office right now. तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी and I was so happy about it. मुझे बड़ा खुश होता था ये विजुअलाइज करते हुए। And then I started writing in my notebook. I started writing in my notebook that मैं इस नोटबुक में हमेशा, this is my notebook and I used to write everything here. I used to write all the things here. रोज लिखता था कि मेरा मैनेजर ऐसा होना चाहिए, मेरा ऑफिस जो है वो एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए, उस ऑफिस में जब मैं ज्वाइन करूं तो मुझे मेरी जो करंट सैलरी है उसका डबल मुझे मिलना चाहिए। ये मैं विजुअलाइज कर रहा था एंड आई स्टार्टेड इन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड इन नवंबर I was contacted by my manager, my current manager, who contacted me in November, and he told me that that we have a position open for you. I mean, not for me basically. We have a position open, and I was watching you from last 6 to 7 months, and I saw you that you are so creative with your skills and you are so amazing. Would you like to join this company? Would you like to join this position? And I said, okay, what was that position? And he said, it is actually a solution architect position in our company for modern management, for workstations, for security. तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली शेयर द जेडी विथ मी। ही शेयर द जेडी विथ मी। अब जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी विच वाज वेरी मच मैचिंग। सो जो मैं पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था उसके हिसाब से मुझे उसमें कोई ऐसी समस्या नज़र नहीं आई कि मैं नहीं कर सकता ये। एंड देयर वाज वन मोर एफर्मेशन विच आई वाज डूइंग इट, दैट मेरा इंटरव्यू बहुत ईजी होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल से इंटरव्यू नहीं दिया है। तो मेरे को इंटरव्यू जो है वो हल्का चाहिए, ये मेरे को ऐसा लालच मेरे मन में आ गया था। सो आई रोट डाउन एज वेल and there were like 7 different rounds which happened with me. At number 1, he took my interview, my line manager, which he currently right now, and after that एक round और हुआ, उनको मैं नहीं जानता था। फिर round 3, फिर round 4, फिर round 5, फिर round 6, and then finally there was a round 7. थोड़ा सा technical पूछा गया, otherwise in all rounds there were no technical discussion which happened. They only talked about what I will be doing here. I was so amazed the fact that
कोई मुझसे इंटरव्यू के टेक्निकल क्वेश्चन पूछ क्यों नहीं रहा है. And in the last round, there were like 5 different questions were asked regarding the security, and I gave them answers very well because I was prepared enough. It was related to Azure and identity and access management. So I gave those answers, and then I thought, and there was one answer which I did not give. The reason I gave because that I'm not using this technology in a vast majority, and that's the reason I don't know the answer at this moment. But yes, if you really want the answer, give me like 5 minutes. I will google this, and in a Microsoft article this answer will be available. It's just that I don't remember by heart, right? Normally ऐसे ही होता है, हम कोई भी इशू आता है तो हम उस पर गूगल ही करते हैं. So ये मैंने किया, और करने के बाद there was like, okay, done. And after 2 weeks I got an offer. I got a call from HR from Nokia that we are ready to offer you this job role. And I was so fascinated. I was so happy that wow, this is becoming a reality. जो मैंने अफर्म किया था वो रियलिटी में चेंज हो रहा है. एंड आई वाज अफ्रेड ऑफ दिस फैक्ट दैट कि अब वो मुझे पैसे देंगे कि नहीं देंगे. सो मेरा जो पैकेज करंटली था उसका लिटरली डबल, जितना डबल हो सकता था वो डबल उन्होंने कर दिया. एंड आई वाज सो हैप्पी. मैंने बाकी सब चीज़ें मांगी ही नहीं उनसे. आई वेटेड फॉर 3 months, and after that there was one more line which I wrote. It happened, and that line was like that, मेरे को ना काम का प्रेशर नहीं चाहिए. एंड मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, September, I did not have a single amount of work. I used to wake up, I used to go to gym, और मैं कंप्यूटर पे बैठता था, सिर्फ पढ़ाई करता था मैं. I was just studying because I don't have any work. And my manager was so happy about the fact that how I'm treating. कोई भी इशू छोटा मोटा आता था मेरे पास तो मैं उस पर काम करना शुरू कर देता था, मैं फिक्स कर देता था. So everyone was so happy. And then I realized that यार मेरे पास तो काम ही नहीं है, ऐसे तो मुझे निकाल देंगे ये. And then I was afraid. And then I chanted this prayer. Because what I was doing is, कोई भी मुझसे पूछता था, और भाई नई कंपनी में ज्वाइन कर लिया, कैसा लग रहा है? अरे यार बहुत मस्त है यार, कोई काम ही नहीं मेरे पास, ज़्यादा कुछ काम धाम है नहीं, आराम से पूरे दिन बैठा रहता हूँ, अपने टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर रहा हूँ, सर्टिफिकेशंस कर रहा हूँ, बस यही चल रहा है. So what I was doing, I was not attracting the work. So I started doing this prayer like, I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. And at the same time, I started a new affirmation, a new visualization. मैंने ये visualization start करी कि I have so much work with me. मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत busy हूँ, मेरे पास फुर्सत नहीं है बिल्कुल काम करने की. I am working on my core area. And you won't believe, suddenly there was a one-to-one which is happening, and then I spoke to my manager that I don't have much work and I really want to show some work. And he said, okay, then kya karna chahte ho? And I said, you know what, on that I want to create a project, and I want to lead that project from end to end. And he was like so happy about it. He said, oh no, you know what, Prabhakar, I really wanted that to happen, and I'm so glad that you asked. And then he spoke to the spokesperson of that team, and then he aligned with me, and now I have that work. And the person, my manager's manager, there was a time that he was stuck on एक किसी issue में वो फंस गया था, and then I started working with him, and I resolved that issue in 15 to 20 minutes. And he was so happy. He was so damn happy about the fact that I am taking care of the project and I'm taking care of the small little issues, and just like that. And he मेरे मैनेजर ने रात के 12 बजे मुझे फ़ोन करके बताया, रात के 12 बजे मैं सो गया था, that Prabhakar, I just got a call from my manager, and he was talking about you, and he was so happy from you. And I was like, what did I do? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये happiness कहाँ से आ रही है? So all this positivity which was coming in, it is all coming in from here, right? So these are the things which I got from practicing Ho'oponopono every day. So guys, I'll tell you something. इस prayer में बहुत ताकत है, and I'm telling you, do come with me. Join this WhatsApp group which I have pasted below. Fill that one-to-one clarity form. I will help you.
I will hold your hand and I'll take you through the journey, and you will realize कि कितना मजा आता है जब जो आप सोचते हो ना वो रियलिटी में बदलता है. Wow, it is just wow. Guys, I tell you something. Come with me. Join this prayer. You are not gonna lose anything. Just your time, which you'll realize that it's so amazing. All right. So thank you so much for listening to me and watching this video. If you feel that it has created a little bit shift in your mind, so please give it a like and subscribe these if you are interested to know more about Ho'oponopono, visualization, affirmation, and law of attraction. So I am basically a life coach and a Ho'oponopono healer. So if you need some guidance, just let me know. I will help you. Thank you. Bye bye.